Hi all the students, welcome once again to XAT YouTube channel. My name is Anil Chaudhary and today genuinely we are going to discuss something very interesting and important for XAT. And the topic which we are going to cover today, that is logical reasoning. We know that the very first section of XAT is VA plus LR. So along with the very typical questions of English, possibly reading comprehension passages, fill in the blanks, grammar, etc. A good number of questions we need to face on logical reasoning also. We can also call it critical reasoning, whatever name you people give, but these questions are very important for XAT and not so tough to handle as well. Students, when we talk about logical reasoning, let us first try to understand what are the most common questions we will have to face in this. A small paragraph is given to us and one question is based on that. And the question can be of multiple varieties. Possibly, students, we are supposed to find out what can be the possible assumption of the argument which is given here, or whatever the author has said in the paragraph, it is based on what assumption. So this can also be one of the questions. Sometimes we are supposed to draw the conclusion. Sometimes we are supposed to find out the inference. Sometimes, students, we are supposed to find out among the 5 options which option strengthens the argument which is given in the paragraph, or possibly which option weakens the author's argument. So these are the most common types of questions which we need to face in logical reasoning. So students, in today's class, we are going to have a detailed discussion over it. I have taken 12 questions in today's class. 3 or 4 questions are actual PYQs of XAT 2023 and 22. And along with them, I have also shortlisted such 7 to 8 very interesting and very important questions which will actually help you in understanding the approach of getting the correct answers here. So for each and every question, you need to pause it, try to give the answer on your own, then listen to my explanation and then just compare both the thoughts. The students, by this, actually you will understand how we can score high in logical reasoning. And believe me, students, 100% accuracy, achieving 100% accuracy is possible as far as LR is concerned. Okay, so shall we begin now? Are you all ready? Done. तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले वीडियो को लाइक करो. अब स्टूडेंट्स, लाइक करने के लिए पूरा वीडियो देखने की जरूरत है क्या? इतने सारे वीडियोस आप देख चुके हैं and you people know what is the level of the content we are providing on this channel. Okay, चलिए students, here we come with the very first question. A paragraph is given to us and there will be 2 questions. So one question is on the screen and the second I'll show on the second slide. So it's a typical XAT kind of question. A paragraph is given to us and question is based on that. Okay, do understand properly and give the answer. Got it? Okay. Hello, let us discuss the paragraph now. The best part with this paragraph is understanding it is not so tough. Rahul Dravid, the head coach of India's under-19 cricket team, explained that the 2018 under-19 World Cup team selection strategy was about providing opportunities to a lot more players to come into the India under-19 fold. He explained that more than winning, which is not the right touchstone of success of a program at this level, what matters is how many of the players are able to move to the next level, that is playing first-class cricket. He therefore made a conscious decision to not select the players from the previous World Cup to the 2018 under-19 World Cup squad. Now students, the question says which one of the following statements is consistent with the Dravid's selection strategy for the 2018 under-19 World Cup as stated above. So students, try to understand. We need to find out which option is consistent with Rahul Dravid's strategy. अब यहाँ पर सबसे important क्या है? We need to understand what is the approach of Rahul Dravid. He says that under-19 World Cup, actually he has been entrusted with the task of selecting players for the under-19 World Cup. But he says that winning under-19 World Cup should not be the end goal. What is more important is we should be able to select such very good players who can actually play a bigger role in the first-class cricket. Actually, Rahul Dravid is more concerned about having some good players for the first-class cricket rather than just winning under-19 World Cup. So the under-19 team, he wants to use it as a platform where he wants to judge the player and then he can select for the first-class cricket. So that is the kind of approach which Rahul Dravid is keeping in mind. So now students, the moment you understand his approach, I think giving the answer
will not be so tough. So what is the correct answer? I think if you have read all the 4 options, possibly students may get confused between B and C. B says playing a sport is more important than winning or losing. And C says the Under-19 World Cup is a stepping stone to first-class cricket, and winning it should not be the end goal. So anyway, students, if you compare these 2 options, indeed the correct answer is third option. Try to understand. Rahul Dravid's strategy is not philosophical. Okay, actually second option is not the correct answer. Very beautifully, the paper setter is trying to confuse you people. Students, Rahul Dravid is not of that opinion that participation is more important than winning or losing. Indeed, Rahul Dravid believes in winning, but not the Under-19 World Cup, but actually the first-class World Cup. He's more concerned about that. So try to understand. Second option cannot be the correct answer. The best option is third, isn't it? So this question was not so tough, and these kind of questions, anyway, students, you will have to face in XAT. So one more question is based on this paragraph. Let me take that. Yes. The paragraph remains one and the same. And which of the following is the most desirable outcome of Dravid's selection strategy from his perspective? Anyway, students, we have understood his perspective. Compare all the 4 options and try to give the correct answer. Anyway, students, in XAT, you are going to have 5 options. Okay? Come on. So what is the right answer? Possibly, how many students have given the first one? Okay. And how many students have given the fourth one? I think students answer A or D में से होना चाहिए, isn't it? चलिए, coming on the first one. The team losing the World Cup, but 5 players from the squad going on to play first-class cricket. Anyway, students, even if the team loses the Under-19 World Cup, but out of that team, if 5 players we are able to select for the first-class cricket, I think the purpose of Rahul Dravid's strategy will be fulfilled here. Even if first option happens, Rahul Dravid will be very happy here, isn't it? आप समझो students, Rahul Dravid की strategy क्या है? He says that winning the Under-19 World Cup is not important. What is more important is हमें first-class cricket के लिए बहुत अच्छे players चाहिए. So even if the first option happens, possibly Dravid will be very happy because he is able to get 5 very good players for the first-class cricket. But anyway, students, you people will have to understand what actually the question is. The question is the most desirable outcome. इसका मतलब है सोने पे सुहागा. वैसे तो students अगर 5 players first-class cricket में select हो जाए, that itself is sufficient to make Rahul Dravid happy. But still, when I say most desirable, कितना अच्छा हो students कि हम Under-19 World Cup भी जीत जाएं और 5 players का first-class cricket में selection भी हो जाए, isn't it? So I think that becomes the most desirable outcome. So students, first option is indeed not the correct answer. The correct answer is fourth option. The fourth option says the team winning the World Cup and 5 players from the squad going on to play first-class cricket. Yes, this becomes the best thing which can happen here. You people try to understand. Rahul Dravid ये कभी नहीं चाहता है कि अपन Under-19 World Cup हारें, but वो ये कहता है कि Under-19 World Cup जीतना is not the sole focus. Okay, it is not the end goal. इससे भी बड़ा important goal कुछ और है, understand. But anyway, when I say most desirable outcome, 100% fourth option becomes the correct answer. I think you people agree with me? Yes? Wonderful. चलिए, coming on students, question number 3. Now this becomes the actual question of XAT 2023. So if you haven't seen XAT 2023, this becomes the actual question of logical reasoning, and do understand. The best thing, the best approach is before reading the paragraph, it's always better to have a look over the question. Students, you'll be saving some time here. So which of the following will be the most meaningful conclusion of the passage? We are supposed to find out the conclusion. Okay. So keeping this point in mind, you will have to read the paragraph. Okay. Got the answer? Done? चलिए अब मेरे साथ इसको solve करेंगे. As a generation, we are rethinking what we are to others. Our technological prowess has become a wireless lifeline for others. Some of us apply ourselves to innovation, hackathons, and other forms of technological creativity. Our families look to us to know how to use technology both to waste time and to make meaning. Some of us set up FaceTime for those denied face-to-face time
wonderful line. We show them it will be okay, that digital relationships are real relationships, though in fact we are not always sure. So which of the following will be the most meaningful conclusion of the passage? I think students, the moment you understand what is the crux of the passage, what is the main purpose of writing the passage, what is the main theme of the passage, giving the correct answer is not so tough. Anyway, we are actually discussing the change which has taken place in the social relationship because of the technological advent. So, which is the best answer? Coming on the first one, change is the only constant in life, so people must embrace technology. Not at all. Technological advancement helps society derive meaning from work. Not at all. Try to understand. Even second option is not correct. The approach which is given in the paragraph, we need to ultimately catch it. Third option, the pandemic has increased societal dependence on technology. Anyway, there is no discussion about pandemic. Technology is destroying families and communities. I cannot be so brutal here. So I think when I say technology is destroying families and communities, that kind of severity is also not given in this paragraph. Fifth, technology usage has changed social relations for this generation. Indeed, students, fifth option is the only possible correct answer. And students, there is no other option which is even closer also. So this was the actual question of XAT. Now you people decide what was the toughness level. And a student of your caliber, can't we manage to give the correct answer here? Indeed, be a bit careful and we can actually give correct answer here. Okay, let us take the next question. Question number 4. Now even this question becomes actual PYQ of XAT. And what are we supposed to do? Which of the following statements most seriously weakens the conclusion? So students, we are supposed to find out which option most seriously weakens the conclusion. Okay, so we need to understand the conclusion properly. Okay, and we need to understand that conclusion is based on what data or what premise. Okay, then only it is possible to weaken it. Okay, coming on. Shall we discuss it now? Chalo, mere saath isko solve karu. When facing various challenges, people in today's digital world heavily rely on private online information seeking behavior. Individuals who experience depression will often attempt to understand the predicament and seek remedy by searching the internet for depression related information and treatment. A recent report says that there exists evidence of many searches comprising the word depression during and just after the elections in countrywide. So it can be concluded that, these students, the conclusion is coming here. So it can be concluded that the election is experienced by many people in countrywide as a truly psychological traumatizing event and as such as being potentially depressionogenic. So which of the following statements most seriously weakens the conclusion drawn in the passage? So students, on the basis of a report, we are drawing a conclusion. हमने क्या देखा है कि जब कंट्री वाइड में इलेक्शंस होते हैं तो उसके जस्ट बाद में आपके बहुत सारे सर्चेस बढ़ जाते हैं इंटरनेट पर पर्टेनिंग टू डिप्रेशन. तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि पॉसिबली जो इलेक्शंस होते हैं कंट्री वाइड में दे आर साइकोलॉजिकली ट्रॉमाटाइजिंग. ओके, so students, we need to find out the option which actually weakens the conclusion. Okay, so coming on the first one, per day sale of anti-depression drugs is constant across the years in countrywide. I think students, the very first option, okay, can be logically the correct answer, because the first option ये कहता है कि इतने सालों में countrywide में एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की जो सेल है उसमें कोई चेंज नहीं है. That itself means that during the period of elections वहाँ पर डिप्रेशन को लेकर प्रॉब्लम बढ़ जाती है या लोग साइकोलॉजिकली ट्रॉमा फील करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस. ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स रेफरेंस नहीं मिलता इफ द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? आपके ये जो ड्रग्स हैं एंटी डिप्रेशन वो बिल्कुल उसकी सेल कांस्टेंट है. दैट मीन्स वॉट एवर कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन हियर दैट automatically gets weakened here. So I think students, first option is indeed the correct answer. Coming on the various other options as well. So many people do not use the internet in country X. Anyway, students, we are actually talking about country Y. And even if I consider it to be country Y, okay, even second option cannot be the correct answer. Okay, because even if many people are not using internet, at least whatever number of people are using internet, उन पर तो students ये conclusion सही हो सकता है ना.
तो ये कहना कि बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज नहीं करते हैं, it hardly matters. And moreover, it is about country X, whereas the discussion is about country Y. Coming on the third one, election is a festival in some countries. People happily choose the leader by casting votes. Even if this is the case in some countries, we are actually concerned about country Y. So I think our discussion has to be related to that only. Coming on the fourth one, depression-related advertisements are on the rise during and just after the election in country Y. The students, if I take the fourth option, it actually strengthens the conclusion. Conclusion क्या कहता है कि जो इलेक्शन है वो साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइजिंग है, इसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. एंड अगेन स्टूडेंट्स, अगर फोर्थ ऑप्शन सही है तो एक्चुअली यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो स्ट्रेंथन होता है, वो वीकन कैसे होता है, अंडरस्टैंड. फोर्थ ऑप्शन तो इनफैक्ट ये बताता है कि यस, ये जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया दैट इज इंडीड करेक्ट. ओके, दैट इज द रीजन इतने एडवर्टीजमेंट्स रिलीज होते हैं depression related. So fourth option strengthens the argument, does not weaken it. Coming on the fifth one, a survey in country wise shows that an election can cause a significant increase in the average level of depression. Now students understand, even fifth option strengthens the conclusion, it does not weaken it. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ हमें स्टूडेंट्स से समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द कंक्लूजन. And we need to understand that conclusion is based on what premise. Then only it is possible to give the correct answer. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, क्वेश्चन पूछता है कि which option is weakening, और हम लोग ऐसा ऑप्शन मार्क करते हैं जो एक्चुअल में स्ट्रेंथन करता है. Do understand there is only one option which is actually very much correct, and that is the very first option. I guess you people have understood what is the logic here, isn't it? तो जब सेल ही नहीं बढ़ा, कोई चेंज ही नहीं है, तो हम जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली वीकन हो जाएगा. ओके, अच्छा सोचो अगर ये कंक्लूजन सही होता तो फिर एंटी डिप्रेशन जो ड्रग्स हैं उनकी सेल बढ़ जानी चाहिए, बट ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, अंडरस्टैंड. ओके, चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, वन मोर क्वेश्चन, एक्चुअल PYQ of XAT. And see students, this time the question is, which of the following sentences will most logically complete the above excerpt? Okay, that means logical completion of idea. So whatever paragraph is given to us, we need to find out among the 5 options which will be the last line of this paragraph. Which option logically completes the paragraph? Okay. So what is more important is we need to understand the flow of the paragraph first, and then we need to put a full stop on that. Anyway, students, get the answer. Shall we discuss now? Okay. In the future, hydrogen may form a significant part of our energy systems. Today, it is mostly used in oil refineries and fertilizer. But in the future, hydrogen could power our cars, heat our homes, and fuel industry. A recent McKinsey study suggested that in less than 25 years, hydrogen could account for 18% of global energy consumption and reduce carbon dioxide emissions from current levels by some 6 gigatons. So in this paragraph, I'm actually talking about the advantages of hydrogen, and I'm actually discussing the potential growth of hydrogen to be used as a fuel in the coming times. So I'm talking about the prospects of hydrogen. In the coming times, possibly it's going to gain a lot of importance. And anyway, students, you people might have heard about liquid hydrogen. Okay. Hello, anyway. Which of the following sentences will most logically complete the above excerpt? First option, Germany unsuccessfully experimented with trains fueled by hydrogen. Students, the flow is very opposite here. मैं इस पूरे पैराग्राफ में हाइड्रोजन का जो प्लस साइड है वो डिस्कस कर रहा हूँ. आई एम डिस्कसिंग द अप साइड. और कहीं पर भी स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता कि लास्ट लाइन नेगेटिव होनी चाहिए, अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. Earlier experts thought that hydrogen fuel would be too expensive. This can be one possible answer. ऐसा पहले सोचा जाता था, लेकिन बाद में इनको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, understand. Anyway, students, I'm not focusing much on the cost part of hydrogen. I'm actually talking more about, okay, what can be the application of this fuel. Coming on the third one. Hydrogen can be made through reformation, electrolysis or pyrolysis. Comes labeled in different colors from simple green to more complicated turquoise. Can be stored as a gas
cryogenic liquid converted to ammonia, or even borane and then finally made useful through a fuel cell engine or burner. Students, I don't think so third option can be the correct answer. We are actually discussing the application part of hydrogen as a fuel rather than discussing the technical way how it actually works. So do understand, you people have to understand the tone of the paragraph. तो कहीं पर भी स्टूडेंट्स हाइड्रोजन कैसे अपन यूज करेंगे उसके टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करना इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ. So third option I don't agree with. Fourth, despite the potential, 90% of the general population knew nothing about hydrogen technology. See students, whether general people know it or not, even that is not the subject matter of discussion here. Fifth, the impact of such a change in the energy system would be huge, potentially generating $2,500 billion in revenue globally and creating more than 30 million jobs. Here students, I'm highlighting the use of the advantages of using hydrogen and the advantages of the growth of so here the fifth option that actually discusses very forcefully the advantages of using hydrogen as a fuel in the coming times. So I think the kind of flow which is given in the paragraph, the best answer is fifth option. Okay, isn't it? So fifth indeed becomes the correct answer, right? So I think there is no question at all. And moreover, see students, जितने भी XAT के questions हैं, एक चीज जो बड़ी common है, the options are not very close. जिन बच्चों को लगता है कि XAT के questions बहुत टफ है, आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझो, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग में. तो वी कैन एक्चुअली मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर. बार बार मैं इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू बी कॉन्फिडेंट इन फेसिंग दीज क्वेश्चंस. ओके, चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Even this becomes the actual question of XAT 2023. I am taking these questions so that you actually come to know what is the level of the questions on XAT. Okay, so a paragraph is given and we are supposed to find out the best inference here. Okay, pause it, give the answer. Done? So कैसा लगा? Question tough था कि easy था? I think this question was easy, isn't it? चलो समझना start करते हैं. The fundamental laws that govern the smallest constituents of matter and energy, when applied to the universe over long enough cosmic timescales, can explain everything that will ever emerge. This means that the formation of literally everything in our universe, from atomic nuclei to atoms, to simple molecules, to complex molecules, to life, to intelligence, to consciousness and beyond, can all be understood as something that emerges directly from the fundamental laws. So students, the key element here is fundamental laws, underpinning reality, with no additional laws and forces. Actually, this paragraph talks about the importance of fundamental laws. The paragraph says that the moment we understand fundamental laws, we can actually understand the way the universe works and the way even an atom works. So whatever phenomena are going on across the universe, the basics lie in the fundamental laws. So that is what the paragraph talks about. You need to understand what is the overall theme of the paragraph. एक बार students उस theme तक पहुंच गए, after that giving the answer will become easy for us. Coming on the various options, first option, everything in the universe fundamentally occurs randomly. Now try to understand, paper setter हमें यहाँ पर बहुत smartly confuse कर रहा है. उसने actually fundamentally word तो use किया, because paper setter को पता है. The student will be looking for this word in the options, because when the core word is fundamental laws, at least student उसी option को mark करेगा where the word fundamental is coming. At the same time, if you understand the meaning of this option, everything in the universe fundamentally occurs randomly. How is it possible? If it is fundamental, how come it is random then? तो ये जो randomly है ना, that is actually changing the whole meaning here. So first option is not correct. All phenomena in the universe fundamentally occurs spontaneously. Again, students, not at all possible. Spontaneous. Okay, बस कोई चीज एकदम से हो जाती है, immediately हो जाती है, उसको अपन कहते हैं spontaneous. Okay, he gave a spontaneous reply. Okay, that is the way. So again, that is not the meaning of this paragraph. Fundamental laws operating in the universe and in an atom are the same.
इंडीड सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी दोनों ऑप्शन भी स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ोगे वो बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत हैं, एब्सर्ड हैं। द करेक्ट आंसर, द ओनली करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। एंड द बेस्ट पार्ट विद दिस क्वेश्चन इज ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज। तो दैट में स्टूडेंट स्पेशली आई हैव सीन लॉजिकल रीजनिंग में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, वैसे मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं होता। ओके, चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज नॉट अ पीवाईक्यू ऑफ ज़ैट, ये एक अलग से क्वेश्चन है जो मैंने लिया है। अगेन लेवल बिल्कुल वही है जो ज़ैट का है। एंड व्हाट आर वी सपोज टू डू, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकन्स द आर्ग्यूमेंट अबाउट। इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स, पैराग्राफ पढ़ने के पहले एक बार क्वेश्चन ज़रूर देख लेना चाहिए, तो टाइम उसमें काफ़ी सेव हो जाता है एंड वी आर एक्चुअली बिकम फोकस्ड ऑल्सो। गॉट द आंसर? ओके, चलिए, तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट द ऑप्शन which weakens the argument above. So we need to understand the argument first. Gina doesn't understand why she cannot get a job as a computer engineer. She even went back to school and got a degree in computer science. After 2 years on the job market with only a few interviews and no offers, she is starting to wonder if she is not getting hired because she is a woman. And one of her friends told her that women seldom matlab rarely, okay, almost not, never succeed in technology fields and she is beginning to believe it. अब सोचो स्टूडेंट, सबसे पहले तो what is the argument? Actually, Gina is not able to get the job, okay, even after applying to multiple places. तो Gina को रीजन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने एक परसेप्शन बना लिया बिकॉज शी इज़ अ वुमन शी इज़ नॉट गेटिंग अ जॉब। और फिर कोई दोस्त भी मिल गया, उसने भी कह दिया हाँ यार इनके इस इंडस्ट्री में वुमेन के साथ बायस होता है, दे डोंट प्रिफर वुमेन। तो एक्चुअली इसका जो परसेप्शन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि आई एम नॉट गेटिंग जॉब बिकॉज आई एम अ वुमन। ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको वीकन करना है। दैट मीन्स वी विल हैव टू गिव वन सच ऑप्शन, वन सच अ स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई एक्चुअली गीना इज नॉट गेटिंग द जॉब, ओके, सो दैट गीना का जो परसेप्शन है दैट कैन बी काउंटर्ड। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तभी तो स्टूडेंट्स वीकन होगा ना। यस, कमिंग ऑन द ऑप्शंस नाउ। द फर्स्ट ऑप्शन सेज Gina got her degree online. क्या लगता है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन डिग्री थी इसलिए उसको जॉब नहीं मिल रहा है? अच्छा, यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू। इसका मतलब है ये पांचों ऑप्शंस को हमें ट्रू मान के चलना है एंड देन वी विल हैव टू सी इनमें से कौन सा ऑप्शन गीना के परसेप्शन को काउंटर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से गीना की डिग्री ऑनलाइन है, बट मुझे लगता है आईटी इंडस्ट्री में व्हाट मैटर्स मोर इज द क्वालिटी। डिग्री ऑनलाइन है ऑफलाइन है, आई थिंक इंटरव्यू में अगर Gina is able to convince, तो ऑनलाइन होने से बहुत ज़्यादा फर्क वैसे नहीं पड़ना चाहिए, ओके। और अगर डिग्री ऑनलाइन है, ओके, डिस्पाइट हैविंग द क्वालिटी, गीना का अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो पॉसिबली गीना का जो परसेप्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो एनीवे लेट अस सी, अगर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी फर्स्ट ऑप्शन को लेकर नहीं आ रही है तो अपन थोड़ा सा वेट करते हैं, वी विल कंपेयर विद द अदर ऑप्शंस। ऑल द पीपल गीना हैज इंटरव्यूड विद हैव बीन मेन। Now see students, second option हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर सेकेंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, बट डू अंडरस्टैंड सेकेंड ऑप्शन गीना के परसेप्शन को काउंटर नहीं करता है, वीकन नहीं करता है, ये इनफैक्ट और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। आप जस्ट इमेजिन करो, गीना ने जितने इंटरव्यूज फेस किए वो सब मेन थे, तो इससे क्या होगा, गीना का जो परसेप्शन है कि एक्चुअली वुमेन आर नॉट प्रिफर्ड हियर वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो उसने जो सोचा है ना कि आई एम नॉट गेटिंग द सिलेक्शन बिकॉज ऑफ बीइंग अ वुमन, तो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। आप देखो ना जितने इंटरव्यूज हैं वो सब भी तो मैन हैं, तो वुमेन है ही नहीं इस इंडस्ट्री में, तो एक्चुअली दिस इज नॉट वीकनिंग गीना's परसेप्शन, so therefore second option is anyway not possible. Gina had both female and male professors in college. I think students, C becomes irrelevant. Anyway, we are not discussing about the college. We are actually discussing the industry where Gina wants to have a job. Gina graduated with the C average. Oh, I think students, we have got the answer. The correct answer is fourth option. आप सोचो students, अगर Gina का graduation C average में हुआ, so that becomes a very strong reason why actually she is not getting selected for the job. Okay, because academics बहुत poor है. So that gives a strong reason. तो गीना का जो point है कि I am a woman, therefore I am not getting a job. Okay, that gets countered. Madam,
You are not getting job not because you are a woman, but because your academics are very poor. So fourth weakens Gina's argument. So therefore students, the best answer is fourth. तो वन को अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है ही नहीं. फोर्थ अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, अंडरस्टैंड. एंड गीना इंटरव्यूज वेरी वेल. अगर इंटरव्यू बहुत अच्छे होते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर गीना का जो परसेप्शन है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा. एनीवे स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. Now students, a paragraph is given to us and there are two questions based on it. पहला क्वेश्चन कहता है which of the following if true would most strengthen the conclusion above. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें हमें पता करना which option weakens the conclusion. ओके, तो एक पैराग्राफ एंड टू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड बिल्कुल ज़ैट लेवल अंडरस्टैंड. चलिए, कमिंग ऑन. कंपनीज O and P each have the same number of employees who work the same number of hours per week. According to records maintained by each company, the employee of company O had fewer job-related accidents last year than did the employee of company P. So therefore, employees of company O are less likely to have job-related accidents than are employees of company P. And students, which of the following, if true, most strengthen the conclusion above? So we need to first understand what is the conclusion. The conclusion is here. Employees of company O are less likely to have job-related accidents than employees of company P. This becomes the conclusion. And do understand, मैंने पहले भी स्टूडेंट्स किसी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में पढ़ाया था. In an argument, in a paragraph, conclusion is always based on a premise. What is a premise? Premise, it may be a data, it may be some study, it may be some past experience on the basis of which we are drawing a conclusion. तो जिस चीज़ पर स्टूडेंट्स हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसको अपन प्रेमाइस कहते हैं. और यहाँ पर प्रेमाइस क्या है? द लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय ईच कंपनी. तो स्टूडेंट्स, द पास्ट रिकॉर्ड्स दे एक्चुअली बिकम द बेसिस फॉर दिस कंक्लूजन. तो पास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स में हमने देखा है कि कंपनी ओ में जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, सॉरी कंपनी ओ में कम होते हैं एंड पी में ज़्यादा होते हैं. तो उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया दैट द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी ओ दे आर लेस लाइकली टू फेस जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स दैन दैट ऑफ कंपनी पी. तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर. तो व्हाट इज द कंक्लूजन एंड व्हाट इज द प्रमाइस, ये दोनों चीज़ें ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब स्टूडेंट्स, मुझे बताना है वो ऑप्शन जो स्ट्रेंथन करेगा इस कंक्लूजन को. मतलब हमें वो ऑप्शन बताना है जो इनफैक्ट इसे और प्रूव करेगा कि यस, कंपनी पी में जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं. So, which is the correct answer? I think if you compare all the options, the best answer is first option, isn't it? Okay, क्या सारे ऑप्शन समझाने की ज़रूरत है? चलो मैं फर्स्ट समझा देता हूँ. कंपनी P manufactures products that are more hazardous for workers to produce than does company O. अब आप जस्ट इमेजिन करो, कंपनी P ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो वर्कर्स के लिए बहुत हैजर्डस हैं, डेंजरस हैं. That itself means that the chances of having job-related accidents in company P will be more than that of company O. और यही तो conclusion है. Don't you feel like first option actually give a boost to this conclusion? Even first option says that P में job-related accidents होने के chances ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर conclusion strengthen हो रहा है. Yes, first option is indeed the correct answer. बाकी options आप लोग सोचें students, no one is correct. चल, किसी भी ऑप्शन पर इफ यू वांट टू हैव सम क्लैरिटी, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना. पॉसिबली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिप्लाई कर पाऊँ. ओके, बट अदरवाइज अदर स्टूडेंट्स, इवन यू पीपल कैन गिव द रिप्लाई टू एनीवन्स क्वेरी. ओके, चलिए, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द पैराग्राफ इज सेम एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द ऑप्शन व्हिच वीकन्स द कंक्लूजन अबाउट. Now you people try to understand. The conclusion is कि कंपनी O में जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम हैं. एंड दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द प्रमाइस एंड द प्रमाइस इज लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड. अब अगर मुझे वीकन करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस प्रमाइस पर या जिस स्टडी पर या जिस डेटा पर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, इफ आई रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट डेटा इटसेल्फ, ऑन दैट रिकॉर्ड इटसेल्फ, द स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली कंक्लूजन वीकन हो जाएगा. इजंट इट? पॉइंट समझ में आया? बेटा, जिस बेसिस पर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, अगर मैं उस बेसिस पर ही क्वेश्चन मार्क रेज करूं
So that becomes the best way to weaken a conclusion. Okay, चलो, which is the correct answer? Let us see the first option. यहाँ पर मैं थोड़ा सा time spend करूँगा. I'll see all the options. The employees of company B lost more time at work due to job-related accidents than did the employees of company O. In fact, ये तो students answer हो ही नहीं सकता, because ये तो conclusion को strengthen कर रहा है. ये तो in fact ये कहता है कि company B में employees are spending more time for job-related accidents. That itself shows that job-related accidents होने के chances P में ज़्यादा है. ये तो और in fact उस premise को, उस conclusion को strengthen कर रहा है. तो first option is not possible. Coming on the second one, company P considered more types of accidents to be job-related than did company O. Okay, क्या लगता है स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन पॉसिबल है? चलो इसको अपन डिस्कस करते हैं थोड़ी सी देर में. Coming on the third one, the employees of company P were sick more often than were the employees of company O. Anyway, students, we are not discussing general sickness. We are actually discussing the job-related accidents. तो मुझे लगता है जो C है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है. और अगर फिर भी इफ आई ड्रॉ सम रेलेवेंस स्टिल, तो भी आप देखो कंपनी पी के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सिक होते हैं. तो कहीं ना कहीं ये वापस यही बताता है कि कंपनी पी में प्रॉब्लम ज़्यादा है. तो सी एनीवे इस कंक्लूजन को स्ट्रेंथन करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेलेवेंट ही नहीं है, अगर है तो भी वो स्ट्रेंथन नहीं करेगा, वीकन तो नहीं करेगा. फोर्थ ऑप्शन, सेवरल एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी ओ ईच हैड मोर देन वन जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट. फोर्थ ऑप्शन कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस. इसे भी अपन कंसिडर करते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स एट कंपनी ओ इन्वॉल्व अ सिंगल मशीन. आई थिंक इवन दिस बिकम्स इररेलेवेंट. सिंगल मशीन इन्वॉल्व थी, मल्टीपल मशीन्स इन्वॉल्व थी, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन. द सब्जेक्ट मैटर इज जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स कहाँ ज़्यादा होने के चांसेस हैं. ओके, कंक्लूजन कहता है पी में हमें उसको वीकन करना है. ओके, अब सी देयर आर टू ऑप्शंस, B and D. बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा. आई थिंक अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो विथ फोर्थ ऑप्शन D. बट स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन B. यस, आई विल गो विथ सेकेंड ऑप्शन. व्हाई इज इट सो? समझो. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखो फोर्थ ऑप्शन, सेवरल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ओ ईच हैड मोर देन वन जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स. तो कंपनी ओ में ऐसे कुछ एम्प्लॉयज हैं जिसके एक से ज़्यादा बार जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो चुके हैं. ऐसे सेवरल एम्प्लॉयज हैं. बट ऐसा भी तो पॉसिबल है स्टूडेंट्स कंपनी पी में ऐसे एम्प्लॉयज़ और भी ज़्यादा हों. एंड इन फैक्ट अगर कंपनियों में कुछ एम्प्लॉयज़ के मल्टीपल एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, इससे ये कहना कि कंपनी ओ में एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा हैं दैन कंपनी पी, अगेन दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मानता हूँ कि कंपनियों में ऐसे लोग हैं जिनके साथ मल्टीपल एक्सीडेंट्स हुए हैं, बट ऐसे लोग कंपनी पी में और ज़्यादा हों, इसके भी तो चांसेस हैं. तो इसीलिए स्टूडेंट्स ऑप्शन फोर्थ हमें बहुत सूटेबल तो लग रहा है. ओके, अगर मेरे पास सेकेंड ऑप्शन नहीं होता तो पॉसिबली आई वुड हैव मार्क्ड फोर्थ ऑप्शन एज द आंसर. बट व्हेन आई हैव अ क्लियर कट ऑप्शन, आई विल टेल यू व्हाई सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. मैं उसका रीजन देता हूँ, देन यू कंपेयर एंड डिसाइड. देखो, कमिंग ऑन द सेकेंड वन, कंपनी पी कंसिडर्ड मोर टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स टू बी जॉब रिलेटेड दैन डिड कंपनी ओ. एक्चुअली सेकेंड ऑप्शन ये कहता है ऐसा नहीं है कि कंपनी ओ में जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स कम होते हैं. होते तो कंपनी ओ में भी बहुत सारे हैं, बट दे डोंट कंसीडर दोज एक्सीडेंट्स टू बी जॉब रिलेटेड. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. मेरा कंक्लूजन जो था वो किस प्रेमाइस पर बेस्ड था? पास्ट रिकॉर्ड्स. सर पास्ट रिकॉर्ड से पता चलता है कि कंपनी पी में जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ओ में कम होते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट द सेकेंड ऑप्शन सेज, कंपनी पी कंसिडर मोर टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स टू बी जॉब रिलेटेड दैन दैट कंपनी ओ. इसका मतलब है जो पास्ट रिकॉर्ड्स में लिखा गया कि कंपनी ओ में जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स कम होते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट. आई एम रेजिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट. व्हाट आई मीन टू से इज कंपनी ओ में भी जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, बट दे डोंट कंसिडर. दैट इज द पॉइंट. स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेकेंड ऑप्शन इज रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन द रिकॉर्ड्स इटसेल्फ. कंपनी ओ डज नॉट कंसिडर many types of accidents to be job related, लेकिन कंपनी पी उसे जॉब रिलेटेड मानता है. So that is the reason okay we are drawing this conclusion. But second option is raising a question on the data itself. Second option says company O में accidents बहुत सारे होते हैं, they don't consider it to be job related. That means the data, the records are not authentic. So
any conclusion which we draw on the basis of those records will again be not authentic. Hence, second option weakens the conclusion. I hope the point is clear. Now coming on to the next question. And this question is very interesting. And I see 90% of the students giving wrong answer of this question. So it becomes a challenge question for all the students. Yes. तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? इसका सही जवाब अगर आपने दिया तो मैं बिल्कुल मान जाऊंगा. ओके, वंडरफुल. चलिए कमेंट करके फिर मुझे बताना कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही है. ओके, आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन नाउ. So the question says, which of the following, if true, most seriously weakens the conclusion drawn? So let us read the paragraph now. Opponents of laws that require automobile drivers and passengers to wear seat belts argue that in a free society, people have the rights to take risks as long as the people do not harm others as a result of taking the risk. As a result, they conclude that it should be each person's decision whether or not to wear a seat belt. So try to understand, this part becomes the conclusion. It has to be each person's choice. कि भाई सीट बेल्ट पहनूं या ना पहनूं, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए. अंडरस्टैंड? ओके, तो एंड व्हाट इज द लॉजिक? मैं उसके पीछे का रीजन क्या दे रहा हूँ? आई से दैट वी लिव इन अ फ्री सोसाइटी, एंड व्हेन वी लिव इन अ फ्री सोसाइटी वी शुड हैव द फ्रीडम टू टेक रिस्क ऑल्सो, एज फार एज वी आर नॉट हर्टिंग अदर्स. अगर मैं सीट बेल्ट नहीं पहनता हूँ तो जो भी होगा एक्सीडेंट वगैरह तो मेरा नुकसान होगा. अगर कोई डैमेज होगा या कोई चोट लगेगी तो मुझे लगेगी. अंडरस्टैंड? तो मैं किसी को हर्ट थोड़ी कर रहा हूँ. Okay, and if I'm keeping myself at risk, at least that freedom should be there. So on the basis of this logic, I conclude that it should be each person's decision to decide whether to wear a seat belt or not. This is the conclusion. अब सोचो स्टूडेंट्स, मुझे इस कंक्लूजन को वीकन करना है. अभी मैंने जब लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था तो ये बताया था स्टूडेंट्स, कंक्लूजन जिस लॉजिक पर बेस्ड होता है, जिस डेटा पर बेस्ड होता है, if we actually shatter that logic, if we raise a question on that logic, तो conclusion अपने आप weaken हो जाएगा. Okay, and what is the logic? Try to understand. The logic is, we live in a free society, we should have the freedom to take risk as far as we are not hurting others. Okay, तो इस particular premise पर ये पूरा conclusion based है. So now options को अपन पढ़ते हैं. Let us try to understand. Many new cars are built with seat belts that automatically fasten when someone sits in the front seat. See students, first option आपको बहुत beautifully confuse करता है. First option is not the correct answer. मान लेते हैं कि बहुत सारी कार्स में इस तरह की टेक्नोलॉजी है. So what? हम तो बेसिकली उस प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे हैं. क्या सीट बेल्ट कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वी हैव गॉट दिस टेक्नोलॉजी एंड नाउ दिस क्वेश्चन इटसेल्फ बिकम्स इररिलेवेंट. ऐसा थोड़ी होता है. द क्वेश्चन इज स्टिल रिलेवेंट कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन तो अभी भी मैटर करता है. एनीवे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सेकंड, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस रेट्स फॉर ऑल ऑटोमोबाइल ओनर्स are higher because of the need to pay for the increased injuries or deaths of people not wearing seat belts. I think a majority of the students, second option को हो सकता है बहुत सारे students बिल्कुल rule out कर दें. They will think like second option is not the correct answer because anyway we are discussing about something like insurance rates and all, and which seem to be very much irrelevant with the topic. But anyway, second option में मैं थोड़ी देर में आता हूँ. Third, the rate of automobile fatalities in states that do not have mandatory seatbelt laws is greater than the rate of fatalities in states that do have such laws. चलो मान भी जाते हैं कि जहाँ सीट बेल्ट के लॉज नहीं है वहाँ पर कैजुअलिटीज ज़्यादा होती है, अंडरस्टैंड, डेथ्स ज़्यादा होती है, मान भी जाते हैं. बट फिर भी आप इस लॉजिक को काउंटर कैसे करोगे? भाई मैं क्या रहा हूँ, अंडरस्टैंड. ओके, अगर डेथ्स होती है तो मेरी होती है ना, अंडरस्टैंड. अगर मैं सीट बेल्ट नहीं पहनता हूँ तो आई एम गोइंग टू डाई. ओके, तो इफ आई एम रिस्किंग माई सेल्फ, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू पीपल हैव? am I killing someone? No. So let me take the risk. So do understand. जिन बच्चों को लगता है कि फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अगेन थर्ड इज नॉट करेक्ट. आप समझने की कोशिश करो. आई डू अंडरस्टैंड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम सेइंग दैट even if the persons are dying because of not wearing seat belts, they are taking the risk and that is their logic. Let us take the risk. We are not killing anyone. So do understand, even C cannot counter this conclusion. Fourth,
In automobile accidents, a greater number of passengers who do not wear seat belts are injured than the passengers who do wear seat belts. Again, the same logic. Even if this is happening, okay, the people who are getting injured, they are saying that कि भाई अगर नहीं पहनते हैं seat belt, so we are getting injured. We are not hurting someone else. But at least we should have the freedom to get injured. तो इसीलिए students ये कहना कि they will get injured or they are getting injured, so therefore it is compulsory. No. Fourth option is also not countering the conclusion. The correct answer to this question is only one. That is the second option. Now students, I'll tell you why. देखो, सबसे पहले तो you people understand, ये जो पूरा conclusion है, that is based on one logic. We are not hurting others. So as far as we are not hurting others, we should have the right to take the risk. Okay? अब students, अगर मैं ये prove कर दूँ, by not wearing seat belts, you are actually hurting others. तो ये जो पूरा logic है, वो shatter हो जाएगा, understand? अब सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? सेकेंड ऑप्शन सेज ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस रेट्स फॉर ऑल ऑटोमोबाइल ओनर्स आर हायर बिकॉज ऑफ द नीड टू पे फॉर द इंक्रीज्ड इंजुरीज और डेथ्स ऑफ पीपल नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स. एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग इज, जो लोग सीट बेल्ट्स नहीं पहनते हैं तो कैजुअलिटीज ज़्यादा होती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा क्लेम पास करना होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट इंश्योरेंस प्रीमियम्स के रेट्स बढ़ जाते हैं. अब प्रीमियम्स के रेट जब बढ़ेंगे तो जो लोग सीट बेल्ट्स पहनते हैं उन्हें भी ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है. Isn't it? Now try to understand. Because of the people who are not wearing seat belts, the people who are wearing seat belts, even they have to pay more insurance premium. So because of you are not wearing seat belts, even these people are getting hurt, at least financially and economically. Isn't it? तो ये कहना कि हम सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं इसलिए हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं, नो. ओके बॉस, जब आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो तो पहनने वालों का इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ जाता है. तो यू आर एक्चुअली इनडायरेक्टली हर्टिंग समवन्स इंटरेस्ट. तो इसीलिए बातें मत बनाओ, चुपचाप सीट बेल्ट पहनो. दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड ऑप्शन. तो यस, सेकेंड ऑप्शन काउंटर करता है. आप लोग सोचें, समझें. द लॉजिक विच आई हैव गिवन, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी क्लियर नाउ. चल, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें एंड कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें. चलिए स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन, वन मोर क्वेश्चन. Now which of the following if to most weakens the argument above? Okay, चलिए, I think this question is not so tough. 3 years ago, Ron gave up eating anything with wheat in it. In that time, he lowered his cholesterol by 100 points and lost nearly 85 pounds. He says he feels better than he has in years. As a result, he is writing a book which says that everyone should stop eating wheat products. He says people are not made to eat wheat and that giving it up is the key to losing weight and being healthier. So which of the following, if true, most weakens the argument above? So वापस से students, what is the argument? The argument is that people, everyone should stop eating wheat. And this argument is based on what premise? The premise is this person Ron, he gave up eating wheat and he got some positive results. तो उसने गेहूं खाना छोड़ा और उसके कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसको मिले. तो उसने ये आर्ग्यूमेंट दे दिया, कंक्लूजन दे दिया कि सब लोगों को गेहूं छोड़ देना चाहिए. आवर बॉडी इज नॉट मेड फॉर व्हीट. ओके, अब इसे वीकन करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसका जो कंक्लूजन है, जिस प्रेमाइस पर बेस्ड है, हमें उसी को एक एक वीकन करना है. हमें उस प्रेमाइस पर क्वेश्चन मार्क रेज करना है. वी विल हैव टू जस्टिफाई दैट. वो जो प्रेमाइस है, दैट इटसेल्फ इज नॉट वेरी मच ऑथेंटिक. अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो यस, द आर्ग्यूमेंट विल गेट वीकन. एक ही लॉजिक सभी क्वेश्चंस में वी आर अप्लाइंग. नाउ सी, व्हाट इज द बेस्ट आंसर? Wheat is found in nearly all processed foods? No. Ron has a family history of celiac disease. Celiac disease का मतलब है ऐसे डिजीज जो wheat के ग्लूटेन से होता है. ओके, मतलब wheat से रिलेटेड डिजीज है. तो Ron has a family history of celiac disease, which is an extreme sensitivity to wheat gluten. I think students, we have got the correct answer. The correct answer is second option. Okay, why second option? Try to understand. See, whatever conclusion Ron has drawn is purely on the basis of his own personal experience after giving up eating wheat. अब सोचो स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन उसी पर क्वेश्चन बेस कर रहा है. Ron, you have got good results because you belong to a family where there is some
family history of celiac disease. So that is the reason the moment you left wheat, you got some good results. But if you consider that the same results everyone is going to get, I think that becomes exaggeration. बेटा तुम्हें रिजल्ट इसलिए मिल पाया क्योंकि तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री उस तरह की, अंडरस्टैंड. ओके, तो सेम रिजल्ट हर पर्सन को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस. हाउ कैन यू say this? So I think students, second option becomes the correct answer. Now all the students, I think the logic is absolutely clear. Okay, the second option is indeed the correct answer. So by this the session gets over. So students, कैसा लगा ये पूरा लॉजिकल रीजनिंग का डिस्कशन? ओके, और जितने लॉजिक्स मैंने बताया, जितने द वे ऑफ गिविंग द आंसर, उस पर यू पीपल शुड फोकस. अब क्या आपका फोकस सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, आप उसके डेप्थ में जाओ, उसको समझो, डॉट्स को कनेक्ट करो. ओके, तो बड़े इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस थे, पैटर्न्स थे, और बहुत अच्छी तरह से हमने इसको डिस्कस किया. ओके, ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून विद अ न्यू टॉपिक, एंड दैट इज अप्रोचिंग फास्ट. So please keep working hard and keep giving your best. Okay, all the best from the complete Icon XAT.